जी, last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. will you, एक second, जी, will you agree with this? जी, नहीं, suppose you give a certain thing, manifesto. so ये तो government of the political party so formed must implement the program of the political party. ये manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree, वो judgment दे रहे हैं कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे। ऐसे होना ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए, it's like a wish ना, court cannot direct। suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए, for instance, आपके मैनिफेस्टो में लिख दें, court can't direct you, parliament can change laws if they want to। correct। बिल्कुल सही। Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर। सो आई वुड सपोर्ट दिस जजमेंट। एंड आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड इन 10 minutes. Only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd। जी, as a parliamentarian you would not want that to that can be changed। बाकी बिल्कुल ठीक है। चलें जी। अच्छा सर, बिफोर आई एंड एक दो जस्ट द कॉन्सेप्ट कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया। जस्ट द कॉन्सेप्ट, एक केस था काफी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट, उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच की, सो ही वाज गोइंग टू बी अवे। तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल। तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन। So one of the grounds taken was कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया is not the advocate general, he is somebody else। तो कोर्ट ने कहा कि show us the prejudice that was caused because of him not being a advocate general। तो अगर वो prejudice नहीं है तो there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise। Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड। Nobody raised that। नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, हमें आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ें कैसे? जी, वो ये कहते हैं, उनका तो और भी बुनियादी। लेकिन मेरा भी मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था। None of the people have said that। They've only said what your lordship is saying। शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या। Correct। क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना, कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते। That point is conceded, but nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ। और ये जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स मैं कोट करना चाहूंगा जो लॉर्डशिप में से पॉइंट्स डिफरेंट थे। किस पॉइंट पे? इसी पॉइंट पे कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ डी फैक्टो, समथिंग हैपनिंग डी फैक्टो, कि अपॉइंटमेंट्स गलत भी हों तो जो ऑर्डर्स पास हो गए हों या एक्शंस हो गए हों वो नलिफाई नहीं होते। ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना? जी हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूँगी, इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाएं और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है। जी जी, अली वो वाला, दो ज्यादा जजेस के वो। जी
जी, वो फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, अब वो तो सेटल प्रिंसिपल है। तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल, वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस। तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना, आई हैव नो इशू। अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू। ठीक, चलें, अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम बेसिकली खत्म आई एम खत्म जी। आई होप यू आर नॉट खत्म। अच्छा, वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाएं उनको। तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is. Whatever, Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप। ठीक है? और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट, you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है, और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, सो दे वर रिटर्न्ड। नो, मगर वो कौन है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, ही मस्ट हैव दैट। कौन सा थाना है? कोसार। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection, ठीक है? Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ, ठीक है लॉर्ड। इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए जी सर। आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए। And if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing or he can directly. So it would be better if आप कर लें, ठीक है? तो ठीक, Lordship. Anything else, Gaur Sahib? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, please go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. Lordship. Thank you very much for coming into this. No. Actually, I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for. I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. I mean, no point telling the AG, he won't know anything. Ji. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ, you only represent one. नंबर के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं।
अच्छा अच्छा, सॉरी आप, अच्छा, you wanted to add something, जी. Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to two questions that have arisen here during the course of hearing. One was, हाँ साहब, थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. केस को कुछ, we have not taken any, मतलब let's चलिए अब केस पे बात करें. जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ. केस पे बात करें. परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था. The two places, इस्लामाबाद. साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं. नहीं सर, बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने. उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुँचाऊँ. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. And they cannot assemble. खान साहब, आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर आपकी बात ये बात है, तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं. तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में. इसलिए कि अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना. अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते, हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? तो उन्होंने जवाब में लिख दिया भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहां सिक्योरिटी देते हैं. कोई यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं है. नहीं, मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे. जी जी जी, चलिए. We still have a duty to let's proceed with the notice case. to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. जी. Why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी जी. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब, केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना. अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में, उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया, तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में. सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है. जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स ले आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है. मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स वी फील इज स्टिल द पेशावर हाई कोर्ट, बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर बीइंग कैरिड आउट. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में. मगर ये देखिए, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर विच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते. फिर दूसरी बात है, वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया है, पार्टी ने नहीं. वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171, इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपील्ड हो गया है. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट, जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of
the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे इस स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई jurisdiction खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए we all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने jurisdiction का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इम्पोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBI is based in इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली jurisdiction। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम ठीक है, आगे बढ़ाता। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on two recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see, 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. May not so be. If he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may I submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. If another party aggrieved can come home. ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So
ECP कांट कम जी मेरे मेंबर को हटा दिया, अनलेस इट्स अ को-ब्रोंटो रेट, तो अलग बात है, ठीक है। हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो। जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में, जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, तो ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are मेंबर very recent judgments. है। One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी, वो आप, एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का, वो जी सर, हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना कर चाहें ली। वो तो अच्छा। आपने पहले दिन बता दिया था। एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है। वही 2 जजमेंट। हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं। एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था। इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास, इसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो, कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकती। ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू। एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए। उसकी कॉपीज आपको दे दी, दे दे। A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो फुल मेंबर है। आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपीज नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है, इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार। अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट पे नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन वाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये right of information वाला। मुख्तार अहमद अली वाला केस। हाँ तो हमने दे दी अब इंफॉर्मेशन। नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता। जी, मैं another 5 minutes I will provide. आप पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ। पढ़ लीजिए। The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the judgment in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan,
I mean, it's a separate constitutional body, so they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties. अगर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए, आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, we can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say that exceptions can be made. I'm not saying ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, अब आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का. जी, बिफोर द 18th अमेंडमेंट, before the 18th amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you. हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं. उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें. मैं उसके एंड पर बात करूंगा. मैं इसलिए आखिर पे सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी. आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के. पढ़ ली 17th prior to 2010, before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही. अब ये खत्म हो गई है. Every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted. Yes. Under the 18th amendment. But it was brought back by 207 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. Why I'm quoting this example? As you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the
Intra-party election is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का। वो एक उनके सेक्शंस में है, तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है, बिल्कुल एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली जफर कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If you Lordship kindly consider Article 219. So. Opposition So may I read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura, Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of Parliament as a statutory body, it is performing that function. So under Article 219, any जरा 220 भी पढ़ लें. हम ईसीपी की कदर नहीं कर रहे हैं. प्रोवाइजो नहीं 220 पढ़िए. आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं. सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by Election Commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As well.
220 is not with regard to functions, is regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. ये पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं। बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना। ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना। So that's it. Next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं अली जफर साहब, ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ, आप अपने दूर में। I partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशन में there we have clearly taken the position वो बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद ECP ने लगाए हैं, उन्होंने थोड़ी लगाए हैं। हाँ, वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है। जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया ना हाई कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं
Sir, this is ground W on page 49. 49 Page 49. ग्राउंड W W. हाँ पढ़ लें Or of the first paper book 1. हाँ May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी जी फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था पहली बात, फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आप कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटिशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ईसीपी पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे, बिल्कुल सही नहीं लिया। आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत देते हैं साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है, अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूदीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे, उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था कि इसमें 3-4 नहीं, वो कौन से इलेक्शन से, ये इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं, कब की बात है वो? ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूदीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी। बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी में कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ
ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो आइंदा से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट। इट इज जजमेंट इन रैम इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सोनम। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी वो जो 2017 के लॉ के तो इसका देखिए अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज। नहीं, वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं। कह रहे हमारी दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ। नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि भी मैं इलेक्शन में। अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड जो एक एस्पेक्ट है हामिद साहब, पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए। पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party। तो ये तो इन रेम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन? अगर ये बात है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। Then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है। जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी। अभी भी आर नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ 3 डॉक्यूमेंट्स। जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखें, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन जेल किया है कि ये क्या करें हम, उनको दे दिया राइटली सो। देखिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी। मर्डर इज अ क्राइम, मर्डर इज अ क्राइम, नो डाउट जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ FIR। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फौरन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, इफ द लॉ यू कैन लॉ इज
आपको बताएं कि पीटीआई उम्मीदवारों की जानिब से दूसरी जमात के टिकट जमा करवाने का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी